एआई बुट कैंप रो ए सीरीज को प्रथम अध्याय मु सुधांशु तम समस्त को स्वागत करुच्ची। एई बुट कैंप सीरीज रे मु तुमको गोटे सिस्टम लेवल थिंकिंग केमिति करि परिबो से विषय रे कहबी एवं एठू आमे स्टार्ट करिबा गोटे इंटेलिजेंट सिस्टम बिल्ड करिबा जाको आमे कहबा स्टूडेंट ड्रॉप आउट सिस्टम। कौन एटा मु जस्ट एक्सप्लेन करिबी बट थिंक करो गोटे कंपनी बा गोटे मे बी समवन गोटे 12 वीक रो कोडिंग बुट कैंप चलाउछंती मे बी तुम कॉलेज रे हो बा कंपनी रे हो एवं से बुट कैंप 12 वीक्स रो थिला। नाउ 8टा वीक सरी गलानी आ ता भितरे कोन हेची ना 35% स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हे जाइचंती तमु किंतु कहि नांती। जो मैंने बुट कैंप बनाउथिले से माने तम पाखरे आज यू आर द एक्सपर्ट और यू आर जस्ट ए बिगिनर से तम पाखरे आसी पहुंची चंती कि कैन यू हेल्प देम टू सेव रिमेनिंग स्टूडेंट्स सेही कॉन्सेप्ट उपरे ए टोटल बुट कैंप टा। ओके सो तांको बुट कैंप ठीक अछि। लेट्स गो व्हाट वी आर हैविंग इन दिस सीरीज। ए सीरीज रो ए अध्याय रे आमे कोन करिवा ना वी विल सी हाउ द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम द स्टूडेंट ड्रॉप आउट सिस्टम सॉल्व। सेकेंड रे आमे देखिबा कि एआई हाउ इट इज ए बिकम ए सिस्टम जस्ट नॉट ए मॉडल and how I am going to talk about 3 different model and why they exist। ए सब जिनस किंतु स्टार्ट हुए गोटे पॉइंट रू ह्यूमन बिहेवियर। स्टूडेंट भी गोटे ह्यूमन ना तार बिहेवियर को तमे डाटा भाव में कलेक्ट करि परिबो कि तमे जदि कलेक्ट करि परिबो ताले तमे कोन गोटे इंटेलिजेंस ता ऊपर बसै परिबो जो इंटेलिजेंस तमे किछि भी टूल यूज करो कहा को गोटे डिसीजन नबारे हेल्प करिवो एवं से डिसीजन टा वैल्यूएबल हेतिबो से ऑर्गेनाइजेशन पई ताहले जाय कि ना तुमको जने पैसा दबो तमरो सिस्टम रो वैल्यू बढ़िबो एंड we are going to create a architect on top of it। okay so aji a session da is not a coding आज ए very important coding developers आमे coding को साइड रे रखिबा। आज इज a thinking class। तमर लैपटॉप जदि रन होची ग्रेट बढ़िया कथा जदि होनी आज बेटर बंद कर दियो because today watch listen and think with me। in real companies people who think design the systems, people who rush just run the code बुझ तेनु कोडिंग को आमे साइड रे रखि दवा एंड एप्पल रो सेटा गोटे थिला ना स्टार्ट करथिले थिंक डिफरेंट बिकम दैट मिसफिट आमे आज सेही कैप्टा को नै के आगो बढ़िवा। The first question I want to ask you कौन पचारिबी AI is a model कौन आसला माइंड को लेखिलो मु जानची 90% लोकों को माइंड को आसीबो हां AI गोटे मॉडल मु निजे गोटे मॉडल बनेची बाकी कहबो मु किछि गोटे मॉडल यूज करिची मे बी चैट जीपीटी मॉडल यूज करची नल जेमिनी मॉडल यूज करची नले मु काहार तो गोटे मॉडल यूज करची। so AI is a model। first of all whatever your answer that is nothing and right and wrong। in companies जो माने AI ऊपर वर्क करचंती इनफैक्ट दे आर थिंकिंग AI is a system। so in that context models just गोटे टूल्स भलिया आ पूरा सिस्टम भीतर यूज होची। so model is one part of the system where we are thinking AI is completely a system। आ से सिस्टम को जी बुझी परिबो जे थिंक करि परिबो he can just fit one model or two model does not matter but he will subsequently गोटे थिंकिंग इंजिन भलिया निजुकु कौन कर परिबो ना रिप्रेजेंट कर परिबो। so let's go and see what is actually our system, why this student dropout system in fact exist कौन पई ये दुनिया रे रहिबो। आज आई टोल्ड इमेजिन तमे ही से 12 वीक रो बुट कैंप टा चलोच 200 स्टूडेंट जॉइन करजंती बढ़िया चलतिला बट वीक 8 रे तमरो जे
facilitator बा teacher बा maybe think like WhatsApp experts से कहवा पूर्व week 8 रे तुमको बुझा पड़ुची कि 35% disappear करिगलेनी and the teachers find out too late. Students are कौन पढ़ेलेनी. Now the potential जहाँ जाइची now the problem here is जो मैंने रही जाइचंती remaining, can you save them? So here problem is not algorithm, problem is not accuracy, problem is how do I save these students before they quit. Okay, predictions without actions useless. जदि आम किसी एक्शन ही नहीं पारिबा आम केते बढ़िया प्रेडिक्ट करिकी करिबा बा कोन. इंटेलिजेंस ओनली एग्जिस्ट जेतेबेले डिसीजन टा गोटे आउटकम को इंपैक्ट करि जिवो बा सेव कर नबो बा चेंज कर दबो. नाउ दैट इज वेयर व्हाट यू आर बिल्डिंग इज जस्ट नॉट ए मॉडल, you are building a intelligence system and ता ना हमें देचे स्टूडेंट ड्रॉप आउट. ओके सो सिंपल ओडिया रे 200 जन जॉइन कले 8 वीक हे गलानी 70 जन पळैचंती. नाउ टीचर को जणा नै से माने काहे को पळैचंती किछि सिस्टम नै. तम काम हैला गोटे सिस्टम बनेबा कि को स्टूडेंट्स एबे रिस्क रे अछि आ से रिस्क को फाइंड आउट करबा. केमिति फाइंड आउट करबो भाव तम पाखरे बे से जो जे बुट कैम्प चलाउथिले तमे तांकर सॉफ्टवेयर सिस्टम रो डाटा नहीं आस कौन डाटा आनी पारिबो जो माने सब रजिस्ट्रेशन हेतिले से स्टूडेंट कर मे भी से माने जदी तांको बैकग्राउंड देचंती ता ऊपर देथिबे बा से बुट कैम्प चलला बेले अटेंडेंस सिस्टम अछि क्विज अछि डिफरेंट टाइप रो सिस्टम रो तमे डाटा कलेक्ट करछ एंड ए डाटाटा एक्चुअली हमर ह्यूमन बिहेवियर like they attend the class, submit the assignment, ask the doubts, जे जहाँ करछन सब रेकॉर्ड हेछि. नाउ ए बिहेवियरल डाटा आमे डिफरेंट पैरामीटर रे स्टोर करछे. से पैरामीटर तमे कोनोसी भी एपीआई फास्ट एपीआई हो किंबा तमे फ्लैश हो जैंगो हो स्प्रिंग बूट हो फ्रेमवर्क रे करिछ आ तम पाखरे एबे डाटा अछि. नाउ से डाटा तम कोन मीनिंग दबो that question you have to ask. Nahole a data gote number. So the important thing is what is that question you ask so that the data makes sense. So data alone intelligent no. Models also not intelligent. The right question create the intelligence. So what we are going to do is we will go through this type of weeks. आमे ताको जल्दी ही देखिबा but first let's say आमे पचारिबा what are the right questions. So we start with not what algorithm को algorithm आमे choose करनवा but we want to ask right questions to the data sets. Second रे आमे देखिबा कि आमे से question रो गोटे intelligence बनेबा ताको pickle file बनेबा pickle file and pickle file is समस्त जानछन आमे इंटेलिजेंस कोन जुपिटर नोटबुक रे बने दबा एटा करबा जुपिटर नोटबुक रे आमे रन करछि जुपिटर नोटबुक बंद हे गले तम इंटेलिजेंस सरी गला तेनु तम इंटेलिजेंस को तमे पिकल्स रे रखिबो जोटा कि जेमति पिकल्स को सेव करा जाए सेटा को सेव कलो सो दैट आउटसाइड ऑफ द नोटबुक रे सेटा काम करिवो. थर्ड आमे मशीन बनेबा सो दिस मशीन बिकम ए टूल. ए टूल को टेक्नोलॉजी सहायता रे विजिबल करेबा एंड वी विल गिव ए वैल्यू टू इट एंड डेमोन्स्ट्रेट करबा ना से वैल्यू टा को. सो दैट इज वेयर एआई बिकम्स पावरफुल. नाउ आमे जदी रियल डाटा ऊपर वर्क करबा ताले इट इज जस्ट नॉट ए प्रोजेक्ट, इट इज जस्ट नॉट ए आमे बुट कैंप कोडिंग वर्क, इट इज जस्ट ए वर्क फ्लो एंड वर्क फ्लो विल गिव यू दैट तमे जानो को जदी इनसाइट दे देलो तार प्रॉब्लम सॉल्व कर देलो बा तमरो सॉल्यूशन तांकर आउटकम को इंपैक्ट करनाला. ओके दैट इज व्हाई स्टूडेंट ड्रॉप आउट सिस्टम. ओके नाउ द थ्री क्वेश्चंस थ्री मॉडल्स को तमे कहि परियो बिल्ड करियो जन्म देबो. सो द इंपोर्टेंट इज व्हाट इज दैट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क. लेट्स स्टे विथ मी एंड अंडरस्टैंड एतिके पर्यंत तमे कौन बुझिलानी टिके पावर ब्रेक नहीं जाओ आउ निज माइंड भितरे ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कौन तमे देखि परछ कौन तमे स्टूडेंट ड्रॉप आउट सिस्टम को विजुअलाइज करि परछ. जदी कर परछ
भिडियोटाକୁ पॉज कर बा यूट्यूब रे टिके समय नहीं थिंक कर रफले डायग्राम कर कि कौन है प्रोब्लेम स्टेटमेंट कारण जितेबाला तुम आपको यूज करवा स्टार्ट कर सेतबले तुम प्रोब्लेम आड़ को माने यू विल नॉट सीक फॉर आंसर्स यू विल आस्क ए राइट क्वेश्चन कल कमेंट्स रे जनाओ कौन तुम थिंक कल दैट इज द फर्स्ट स्टेप मॉडल्स don't say X model is better than Y model. तमें maybe जानिचो maybe let's say logistic regression. That's a model or random forest. Don't compare the models. What is that data set? Same data set रे तमें को model run करवा उसे कौन intelligence रे तुमको दे पड़ची that important thing. So आमे ଏବେ तीनटा important question पचारिवा. Let's say first type of question हबो भावो तम पाखे जो डाटा सेट ଏବେ अवेलेबल अच्छी व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स एग्जिस्ट दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स एग्जिस्ट आ तमरो मॉडल रो पिटारा भितरु को मॉडलटा ए क्वेश्चन रो आंसर दे परिबो व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स एग्जिस्ट यू नो एटा तमरो जो लर्निंग सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग रो को कैटेगरी रे आछि व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट एग्जिस्ट इज इट ए सुपरवाइज्ड सुपरवाइज लर्निंग रे आउटपुट थाए तापरे तमे कोनस जिंस को नहीं प्रेडिक्ट करो बट व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट एग्जिस्ट एबे करेंटली आम पाखे कोनस आउटपुट नहीं तेणु ये अनसुपरवाइज लर्निंग रे जाउची ताले अनसुपरवाइज लर्निंग रो को एल्गोरिथम को तम डाटा सेट रे यूज करी तमे गोटे इनसाइटफुल पाई परिबो ओके दैट इज द फर्स्ट starting point is we are discovering the intelligent using k-means clustering. Because we don't know nothing yet, k-means does not predict. It group. से group करे ना. It finds students who behave similarly. ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ group ରେ ପକେଇ ଦବ. No label needed. ସେଥିପାଇଁ it discovered the structure by itself. ଏଇଥିରେ we never told who drops out. कि drops out ହେଇଯାଇଛି କି ହେଇଯାଇନି ଆମେ ସେ डाटा सेट रे ଏବେ हेटा कहूने. We are trying to find out a pattern. Student भाव गोटे स्कूल जदि जो जो माने भल टीचर बिना मार्क देखी स्टूडेंट को ग्रुप कर दियंती ना सेई टाइम रे से माने जान देखिचंती से माने को टाइम रे आछंती को सीट रे बसचंती से माने कोन कोन डाउट पचचंती सेई भलिया किछि जिंस को पैटर्न्स को अनुभव करी से कहंती हां ए ग्रुप रे चलो ए पिला आसो बी ग्रुप रे चलो ए पिला आसो सिमिलर बिहेवियर को नहीं ए जो पैटर्निंग करिवा ए ग्रुपिंग करिवा एथिरे माहिर त के मीन्स आ के मीन्स क्लस्टरिंग रे आमे जतबले कोडिंग को हैंडसन नवा आमे देखिबा कि से क्लस्टर को केमिति पैटर्न्स रे डिवाइड करूची जो माने कि धरो रिस्क ड्रिफ्टर आमे गोटे ना देचे दिस इज माय नेम बिहेवियर देखि कि जो मानकर लो अटेंडेंस अछि लो कोडिंग अछि किछि भी डाउट पचाउ ना दे सब बेले लेट रे सबमिट करंती तांको नै कि गोटे क्लस्टर रे पके देली आउ गोटे ग्रुप बनैली जो थरे कि से माने पियर पियर भीतर मेसेज पचाउछन ताको कोन होची कोड रन करछनी एरर आछि ता सांग को पचाउछनी अरे मोर एरर आसला देखलु काई एरर टा फिक्स करिलु से मानकर एवरेज टाइप रो स्कोर अछि बट सब बेले एक्टिव अछंती बट बेले बेले इनकंसिस्टेंट ताको एरर फिक्स हेलानी ता सांग किछि कहलानी काम बंद से माने गोटे ग्रुप रे आउ किछि अछंती साइलेंट ग्राइंडर भलिया कोडिंग मिनिट्स तांकर देखिबो तांकर तू केते समय काली काम करथलु 12 घंटा किंतु काहा किछि पचार नाथि से माने निजे निजे सॉल्व करिया को चेष्टा करचंती दैट द ग्राइंडर्स सो तांकर प्योर मेसेज तो बहुत कम किंतु कोडिंग मिनिट्स बहुत समय तांको हमें आउ गोटे ग्रुप रे छाड़ दवा आउ गोटे ग्रुप रहले जो माने कि अटेंडेंस भी बढ़िया स्कोर भी बढ़िया मार्क क्विज रे भी बढ़िया रेगुलरली कोड कमिट करूचंती आउ ठीक टाइम रे सबमिट कर दोचंती त तांको हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मर ग्रुप रे बनै दवा देखला हमें मुहे मुहे रे जदी बनै दे पाउचे सेति बळे हमें तले जुपिटर नोटबुक को जीव जुपिटर नोटबुक रे तम डाटा सेट रे तमे जतो बळे के मींस को पठेबो तमको लागोनी के मींस क्लस्टरिंग विल हेल्प यू टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ क्लस्टर्स विदाउट having any label without having any information just take a raw data sets and create a cluster
दैट इज मीनिंगफुल बिकज आम राइट क्वेश्चन पचार ना फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन थिला कि व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स एग्जिस्ट एचआर ए क्लस्टरिंग को सेगमेंट कर पारिबो एम्प्लॉई मानकर एंगेजमेंट पैटर्न देखिकी ए टेक प्लेटफॉर्म एई मानको नै परिबो कि कहा ऊपर इंटरवेंशन करियार अछि कहा को ग्रुप को ज्यादा ध्यान दबार अछि को ग्रुप को ठीक अछि को दिटा मेसेज कर देले चलिबो बैंक्स यूज दिस टाइप ऑफ सेगमेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर कस्टमर बिहेवियर कि एई ग्रुप ऑफ कस्टमर माने बहुत एक्टिवली लोन करछंती आंको टिके ऑफर दे दवा आर यू अंडरस्टैंडिंग कि आमे एबे गोटे सिस्टम लेवल थिंकिंग रु फर्स्ट स्टेप को आसी सारचे फर्स्ट क्वेश्चन सहित आम स्टूडेंट ड्रॉप आउट सिस्टम रे कि व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स एग्जिस्ट एपे ए वीडियो को टिके पॉज करके तमे कौन कौन भाभी पारुछ तम पाखे जब डाटा सेट था स्टूडेंट रो जो कोडिंग बुट कैंप रो तमे कौन क्लस्टर बनै था कारण जब तुम माइंड रे बनै परिबो तमे के मीन्स को बुझी पारो आ के मीन्स को बुझी गलो के मीन्स तम पई अनसुपरवाइज लर्निंग किसी न करथिले भी से डाटा सेट को देखी निजे निजे पैटर्न बनेबो जेमती कि तम टीचर ग्रुप बनाती ओके आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू आस्क जदि गोटे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रिस्क रे अछंती ताले सेकंड क्वेश्चन आमे पचारिबा why this particular student is at risk can you give me a reason गोटे मते गोटे रीजन कह डोंट प्रेडिक्ट एनीथिंग मते कह ए जो तू ग्रुप बने जो लेट्स से इट इज ग्रुप बनेला कि एट रिस्क ड्रिफ्टर सोशल लर्नर साइलेंट ग्राइंडर कंसिस्टेंट परफॉर्मर ए चारटा ग्रुप रु मते कहीं कहल देखिया ए ग्रुपटा रिस्क ए ग्रुपटा रिस्क जदि रिस्क कहीं रिस्क ए कहीं रिस्क will bring a important concept of logistic regression कारण ये probability दब कि 82% चांस अच्छी ए ग्रुप रो पिला माने ड्रॉप आउट हे जिवे बाय 8% ड्रॉप आउट हे जिवो इट गिव्स रीजंस कोएफिशिएंट्स कहबो कि एथि पई माने ड्रॉप आउट हे जाउछन जानछ अटेंडेंस गोज अप ड्रॉप आउट रिस्क गोज डाउन अटेंडेंस भलो अछि त ड्रॉप आउट रिस्क कम लेट सबमिशन गो अप सबु बेले ए ग्रुप रो पिला माने लेटली सबमिट करजंती त ए माने ड्रॉप आउट हबार रिस्क अधिका अछि एवरी फीचर्स माने कौन तमर प्रति इंपोर्टेंट कॉलम ए कॉलम कोठो आछि तमे स्कोर नैच तमे अटेंडेंस करछ तमे क्विज करछ तमे अटेंड सबमिट करूछ ए सब गोटे गोटे फीचर ए फीचर्स वेट दे परिबा वेदर द फीचर इज सपोर्टिंग ड्रॉप आउट और नॉट सपोर्टिंग दैट मीन्स केते पॉजिटिव केते नेगेटिव सो जेमति कि गोटे डॉक्टर गोटे पेशेंट को कहे तमा ब्लड प्रेशर बेसी अछि एति पई रिस्क अछि जस्ट रिस्क अछि सही एक्सप्लेनेशन वाला डॉक्टर टा लॉजिस्टिक रिग्रेशन तम ब्लड प्रेशर अच्छी से यही पर्टिकुलर जिनसा रिस्क रे अच्छी सो इट इज गिविंग ए एक्सप्लेनेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन गिव्स अस ए एक्सप्लेनेशन आम क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करूची कि पर्टिकुलर ग्रुप कहीं रिस्क रे अच्छी सो तुम फीचर वेट बाहर कर परिबो कोटा पॉजिटिव कोटा नेगेटिव एंड यू कैन गो हेड लॉजिस्टिक रिग्रेशन तुमको हेल्प करे एथिरे ओके व्हाई दिस मॉडल मैटर बैंक लोन डिफॉल्टर प्रेडिक्ट करिया पे हेल्प करिवो कि जस्ट नॉट व्हाई लोन इज रिजेक्टेड फॉर दिस रीजन दिस ए पर्सन बहुत ही इंक्वायरी करते जाए कि एटी बैंक रे ये बहुत रिस्की पर्सन तेणु वी विल रिजेक्ट हेल्थ केयर यूजेस इट फॉर पेशेंट रिस्क एजुकेशन यूज फॉर कि टीचर नीड टू नो व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज एट रिस्क कौन पे ड्रॉप आउट हो ना सी देख अटेंडेंस आसुनी ठीक से सबमिट गुड़ा सब लेट रे अच्छी से रिस्क रे अच्छी होप तमें मो सहित रिदिम पकड़च लास्ट थर्ड मॉडल सो ए मॉडल हमको एक्सप्लेन कला कि डिसीजन बैंक हेल्थ केयर एजुकेशन ए डिसीजन को ट्रस्ट करेंगे आउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज वेरी गुड एट इट बिकॉज ये क्वेश्चन पचार क्वेश्चन अबाउट रिस्क फैक्टर नाउ हु ड्रॉप्स आउट तमें कौन लगुच जी खाली
अटेंडेंस बहुत अच्छी आउ भाव अटेंडेंस मॉडरेट अच्छी अटेंड होची सी ड्रॉप आउट हबनी एमती किसी अच्छी कि बिकज ह्यूमन डज नॉट बिहेव स्ट्रेट लाइन ह्यूमन बिहेवियर भावुच कि स्ट्रेट लाइन तुम कौन स्ट्रेट लाइन रे बिहेव कर हठात कि तुम किसी गोटे भाव ड्रॉप आउट हो ताकू आइडेंटिफाई करने आमको गोटे फीचर ऊपर डिपेंड कले हबनी it where random forest come into the picture to give you the real intelligence about our core system because our prediction is not just a single liner random forest कौन करे ना 200टा डिसीजन ट्री लेट्स एग्जांपल 200 जन एडवाइजर रखिछि सबु डाटा ऊपर देखि समस्त को तुम इंडिपेंडेंटली डिसीजन नियो कि ड्रॉप आउट हम किए ड्रॉप आउट हेनी बुझे कि नहीं तेणु each ट्री विल भोट तांकर निजर नजरिया हिसाब रे मतलब हिसाब रे तो तुम भाव तुम एमती 200 जनकर कर जड़े एजुकेशन लाइन रे बहुत ही एक्सपीरियंस जड़े कोर्स बनाऊँ जड़े टीचर थे जड़े प्रिंसिपाल होते एम को नहीं कर तो समस्त मतामत तो सामान नुहे ना से मतामत मानक माने ओपिनियन गुड़ा को एकजुट करी मेजोरिटी जहाँ कही से भोट को विन करी इट विल डिसाइड दैट परसेंटेज ऑफ ड्रॉप प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न को बहुत गुरे लोक बसिले धरी पारे ना जड़े सिस्टम डायरेक्ट सिस्टम जड़े मनीष गोटे टाइप भावुँ आउ जड़े मनीष गोटे टाइप भाव ए समस्त कंबाइंड ऑफ नॉलेज को ये बढ़िया धरे तेणु आमर ड्रॉप आउट प्रेडिक्शन रे आम डायरेक्ट क्वेश्चन यही टाइप रो हु इज गोइंग टू ड्रॉप आउट ये भल प्रेडिक्ट करके दे पारिबो वन स्टूडेंट भाव 95% अटेंडेंस बट जीरो कोडिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहबनी लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहब अटेंडेंस अच्छी माने ये भल ताको छाड़ दबो बट रैंडम फॉरेस्ट एटा कैच करिवो कारण जे कोऑर्डिनेटर तांको एक्सपीरियंस रे सी मे बी ए वेटेज टाको गोटे पर्टिकुलर भोट देचंती कि नाही भाई देखो ये अटेंडेंस भल अछि सिना मते किंतु कोडिंग करनी मते प्रोबेबिलिटी लागुचे पड़ेबो तांको ओपिनियन को आउ जन को ओपिनियन को रैंडम फॉरेस्ट मिसई की जेते बेले निजर सिस्टम को आउटपुट तुमको दबो बुझछ कि नहीं भाव 200टा स्टूडेंट देखुचंती आ प्रत्येक टीचर एवं गोटे एक्सपर्ट गोटे स्टूडेंट काउंसिलर निज निजर ओपिनियन दौरान आ मेजोरिटी जो भोटा को कर रिजल्ट को आम यूज करुचे ताहले गोटे टीचर में भी गलत हो पारे किंतु मेजोरिटी ऑफ पीपल एंड डिफरेंट बैकग्राउंड रो जेते कहते गलत हबार प्रोबेबिलिटी कमी जीव ना दैट इज व्हाट रैंडम फॉरेस्ट ऑल अबाउट ओके सो दिस 3 मीन्स लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड रैंडम फॉरेस्ट यही भाया गोटे एनालॉजी रे आमे देखले कि आमे जो करेंट कोडिंग को जीवा पूर्व एटलिस्ट निजे मानस मंथन कले एवं ताकू डाटा को देखिकी ए सब जिनस को प्रेडिक्ट करने को चेष्टा कले सो इंजीनियरिंग इज मैनेजिंग ट्रेड ऑफ सब बेले बुझी था इट्स जस्ट नॉट दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग इट इज नॉट अबाउट ऑल्सो चूजिंग द राइट और बेस्ट एल्गोरिथम चूजिंग द राइट टूल आउ सेटा को आमे गोटे पिकल फाइल बनैकी जदि यूज कर परिबा प्रेडिक्ट करिया पई गोटे पूरा इंटीग्रेशन ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड सिस्टम व्हाई नॉट दैट इज वी आर गोइंग टू डू मु तुमको आर्किटेक्ट डायग्राम देखिए ए सेशन टाको नेक्स्ट सेशन को जीवा जेते बेले से सेशन रे कलेक्ट करिवा आम पिकल फाइल थ्रू आवर नोटबुक्स ओके सो व्हाट डायग्राम आई वांट टू शो यू I want to show you this diagram. Let's go to architect diagram. You can see this. आपको मुझे एमती दे दिली डाटा फ्लो API फ्लो ML फ्लो तमें बनाओ भाव केमिति आमे स्टूडेंट इनटेक रो डाटा फास्ट API रे आनिकी गोटे पोस्टग्रेज रे रखिचे आ से जो डाटा सेट को एक्सपोर्ट करिकी तुमको दिया है गला तमे तम नोटबुक रे डिफरेंट टाइप रो EDA चलाउछो के मीन्स करछो लॉजिस्टिक चलाउछो रैंडम फॉरेस्ट करछो आ गोटे पिकल्स फाइल बनाउछो बिकॉज यू आर आस्किंग द राइट क्वेश्चन तापरे गोटे फास्ट API रे गोटे प्रेडिक्टेबल API बने सेटा को तमे रिजल्ट रे देखोछो कि दिस स्टूडेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग लो हाई मीडियम जो गोटे नुआ
स्टूडेंट रो इनपुट दे दौच कि एबे कह देखिए ये स्टूडेंट रो ये पढ़ेब ना नहीं आउ 4 वीक बाकी अच्छी से तुम जो सिस्टमटा क्या डेभलप करके देखौच कौन मीनिंगफुल हम तापाई कौन तार आउटपुट ए सिस्टम गोटे डिसीजन को इम्पैक्ट करि तमर मतामत कौन नेक्स्ट सेशन रे आको आम रियलिटी को नवा चेष्टा करवा पूरा सीरीज बनैबा जो कि पूरा कोडिंग करी ए पूरा सिस्टम टाको बुझा जदि एटा बुझा पड़ला ना आउ थे वीडियोटा को देख 3 थर देख 5 थर देख निज भितर गोटे थिंकिंग पैटर्न बनाओ थिंकिंग बिल्ड सिस्टम्स नेक्स्ट सीरीज रे आई विल टॉक टू यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड थैंक यू